Good morning. Welcome to Live. I'm Sohini Patel from the Kanan Head Office, Baroda. Before starting today's live session, I would like to give you an insight about who we are. Kanan International is India's premier visa consultancy service catering to sending students across to UK, USA, and Canada, to name a few countries. We are into this visa consultancy service since the past 24 years. We're also into coaching since the past 20 years. We very recently developed e-learning portals for learning and assessment of students who are wanting to study and make a career in these countries, namely UK, USA, and Canada. We have these e-learning portals specially developed for, send abroad tests such as Ielts, GRE, GMAT, SAT, Duolingo, spoken English. We've also very, very recently developed foreign learning programs, and we've started with French as our introduction to foreign language. We've chosen French because French forms a precursor to learning other foreign languages, and if you get a hang of French, you can understand other languages, other foreign languages in a much better way. So French forms like a base for you if you're wanting to get an access to other foreign languages as well. Now today's live session, आज का live session, I will let you know everything about IELTS general test. Okay, before starting again, I would like to give you a recap about what is IELTS. IELTS is an international English language testing system which is designed to test the English proficiency of candidates who are wanting to study or work in UK, USA, Canada, or other countries where English is the language of communication. तो IELTS जनरल जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ IELTS, ओके. एंड IELTS बेसिकली प्रोफिशिएंसी टेस्ट करता है इंग्लिश की फॉर स्टूडेंट्स हु आर वांटिंग टू, वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वैसे कंट्रीज में जाके पढ़ना या सेटल होना चाहते हैं, ओके. IELTS इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इनटू UK एंड मेनी अदर कंट्रीज. नाउ IELTS हैज टू पार्ट्स, IELTS academic and IELTS general. IELTS academic is particularly directed to students who are wanting to study for undergraduate or postgraduate programs in these, where in these countries where English is the main language of communication. Whereas IELTS general is for people who are wanting to work, settle or migrate to these countries. So IELTS academic सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इन कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. वेरएज IELTS जनरल उन लोगों के लिए होता है जो इन कंट्रीज में जाके सेटल होना चाहते हैं, PR लेना चाहते हैं या माइग्रेट होना चाहते हैं, ओके. IELTS जनरल ट्रेनिंग मेजर्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन अ प्रैक्टिकल एवरीडे कंटेक्स्ट. IELTS जनरल जब आप देखेंगे जनरल टेस्ट जो होता है इट विल मेजर योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इन अ प्रैक्टिकल एवरीडे कंटेक्स्ट, ठीक है. उसमें सारे जो कंटेक्स्ट होंगे, सारे जो पार्ट्स होंगे वेरी रिलेटेबल होंगे, वेरी रिलेटेड टू योर लाइफ होंगे, टू योर एवरीडे लाइफ. ऑल द टास्क, ऑल द टेस्ट आर बोथ everything reflects your workplace as well as your social situations. Now both these IELTS, be it academic or general, have 4 modules: listening, reading, writing and speaking, right? When you compare IELTS general with IELTS academic, IELTS general is somewhat easier than IELTS academic. Easier क्योंकि everyday social life को ध्यान में रख के ये टेस्ट डेवलप किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है. Now दोनों में जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग. दोनों के लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शंस कॉमन होते हैं. द डिफरेंस लाई इन द राइटिंग एज वेल एज द रीडिंग सेक्शंस. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्शंस, इफ वी स्टार्ट विद लिसनिंग सेक्शन. इन IELTS जनरल अ लिसनिंग सेक्शन हैज 4, a listening module actually has 4 sections. Listening module में 4 sections होते हैं, listening test में 4 sections होते हैं. Each section has 40 questions. In total there are 40 questions each and you are given 30 minutes to complete a listening test. Now in sections में होता क्या है? Section 1 has a conversation between 2 people. दो लोगों के बीच में एक conversation होती है जो आपको सुनाई जाती है. Section 2 has a monologue set in an everyday social context. तो Section 2 में एक monologue होता है जिसमें only one single person is speaking on a everyday social context. Section 3 has a conversation with up to 4 people on an education or training subject. तो अगेन सेक्शन 3 में एक कॉन्वर्सेशन होगी जिसमें ऑलमोस्ट 1, 2, 3 या 4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ऑन एन एजुकेशन और ट्रेनिंग सब्जेक्ट पे.
एंड सेक्शन 4 अगेन एक मोनोलॉग होता है जो एक एजुकेशन अकेडमिक सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, सच एज अ यूनिवर्सिटी लेक्चर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. और ये सारे सेक्शंस आप एक एक बार ही सुन सकते हो. ऑल दीज सेक्शंस कैन बी हर्ड ओनली वंस. सो दिस इज हाउ अ लिसनिंग sectional test, a listening test is designed. Now moving on to a reading test. Reading test में क्या क्या होता है in an IELTS general exam or in an IELTS general test. Reading section again 3 sections में होता है, 40 questions in total and 60 minutes दी जाती है आपको to complete a reading test. Now इन sections में क्या क्या होता है. Section 1 contains 2 or more factual texts. ठीक है, सेक्शन 1 में factual text होते हैं दो या दो से ज्यादा, 2 or 3 somewhat. Section 2 में it contains 2 factual texts focusing on work related issues. So section 2 में 2 factual texts होते हैं which focus typically on work related issues, and section 3 में again 2 होते हैं but one is more longer and more complex as compared to the other. So again 3 sections in our reading हम समझ चुके हैं. Now moving on to the next module, this which is writing. Writing again दोनों जब आप कंपेयर करेंगे academic and general थोड़े थोड़े अलग होते हैं writing tasks. Right now we are talking about writing tasks for general. Writing task में again 2 parts होते हैं. Part 1 is a letter which is requesting information or explaining a situation, and writing task 2 होता है an essay in response to a problem, a point of view or an argument. तो task 1 होता है writing a letter and task 2 होता है writing an essay. Now moving on to the next section which is speaking, which is one of the most important sections. This section is for about 11 to 15 minutes. It has 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Part 1 जो होता है which is typically directed to your introduction, so you have to go and introduce yourself, and this speaking section is a face-to-face interview of yourself with the examiner, so you are supposed to have a two-way conversation with the examiner. Part 1, as I said, was the introduction. Part 2 is an individual long-term cue card. So in part 2 you're given a cue card, you're given a topic on which you are supposed to speak. More or less ये टॉपिक आपके सामने 1 मिनट तक डिस्प्ले किया जाता है एंड यू आर सपोज टू स्पीक अबाउट इट फॉर अबाउट 2 minutes. So 120 seconds का थ्रेशोल्ड होता है for you to speak about that topic. And part 3 is a discussion where you have a face-to-face communication with the examiner, sometimes even related to the part 2. So extended questions of part 2 are asked in part 3. So यहाँ पे हमने समझा कि IELTS जनरल टेस्ट जो होता है उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. आई जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड ऑल द 4 मॉड्यूल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. IELTS जनरल टेस्ट अगेन प्रोफिशिएंसी टेस्ट करता है इंग्लिश की रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एवरीडे लाइफ. आपका एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ को ध्यान में रख के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी टेस्ट की जाती है. द टास्क, द टेस्ट ऑल रिफ्लेक्ट ऑन आइदर योर सोशल सिचुएशंस और योर वर्क प्लेस सिचुएशंस. लिसनिंग टास्क जो होता है, लिसनिंग टेस्ट जो होता है वो 30 मिनट्स का होता है एंड जैसे मैंने समझाया उसमें 4 रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस या मोनोलॉग्स होते हैं. रीडिंग सेक्शन जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है जिसमें अगेन 3 रीडिंग पैसेजेस होते हैं विद टास्क्स. मैंने आपको तीनों सेक्शंस के बारे में समझाया. 2 और मोर फैक्चुअल टेक्स्ट होते हैं सेक्शन 1 में. सेक्शन 2 में 2 फैक्चुअल टेक्स्ट होते हैं रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड इशूज एंड 3 में 1 लॉन्गर एंड 1 शॉर्टर टेक्स्ट होता है. जो लॉन्गर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. एंड ये जो टास्क होते हैं इन रीडिंग दे आर वेरी ऑथेंटिक, दे आर टेकन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज. मूविंग ऑन टू राइटिंग, टास्क 1 होता है लेटर राइटिंग एंड टास्क 2 होता है ऐसे राइटिंग. एंड स्पीकिंग में एज आई स्पोक इट इज अबाउट 11 to 14 मिनट्स का टेस्ट होता है. यू हैव अ फेस टू फेस इंटरव्यू एंड you know in the speaking test short questions include किए जाते हैं. You have to speak at length, you have to speak about familiar topics and you have a structured discussion in the end with the examiner. So IELTS general एक बहुत ही generalized test होता है. That is why it is said that it is based on a practical everyday context. IELTS general is easier than IELTS academic, and basically when you're wanting to appear for IELTS general test you have to score between 1 to 9. ठीक है, universities might ask you to, they might demand a particular score, a particular overall band score up to 6.5 or something. They may also demand a particular
बैंड्स को फॉर ईच ऑफ द सेक्शन इन सेपरेटली. तो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी डिविजन्स हो सकती है. इट इज़ मल्टी लेवल टेस्ट. तो अपने अपने डिमांड्स हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ की एंड अपनी अपनी चॉइस हो सकती है फॉर यू टू अप्लाई. This was all about IELTS general test. Now, if you have any questions, we may be open to answer those. If there are questions that you may want to ask us separately, chat box में हमारे counselors का number already mentioned है. You may get on to those numbers or you may reach out to us in our head office. We are always available here from 10 a.m. to 7 p.m. In Baroda. And as I mentioned, numbers mentioned already है chat box में. If you have any further queries on any of these tests, we'll be open to take up your queries. We have these live sessions designed for you every day to solve your queries, to have open-ended questions, to ensure that you are well understood about these exams. And to know more, you can always reach out to us. Thank you so much for listening patiently to my live today, and see you next time. Thank you.